this project we need a 9-volt battery and a battery clamp, one resistor and 2 LEDs, and relay and a switch and a breadboard. This is circuit diagram. Here I am giving 9-volt supply to relay by the help of a toggle switch. Then this part is relay, and I will give 9-volt supply to LEDs through 9-volt positive. I am connected to 70 ohm resistor. It will be go to common. Then 2 LEDs are, one is NC and another is NO. When I am executing relay, then it will be NO and it will be NC. If you want to download this circuit diagram, then go to link and click there. Now make this circuit. मैंने यहाँ पर एक ब्रेडबोर्ड लिया है. इससे पहले मैंने एक ब्रेडबोर्ड के बारे में वीडियो बना चुका हूँ. अगर आपको देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक 5 वोल्ट का सप्लाई लिया हूँ मेरे मोबाइल चार्जर से. ये हो गया आपका पॉजिटिव रेल और ये हो गया आपका नेगेटिव रेल. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 10 एम्पियर रिले. एंड एक्चुअली ये जो रिले है ये ब्रेडबोर्ड में सही से नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं इसको एक जंपर वायर की मदद से इसको फिक्स करूँगा. ये जो टर्मिनल है ये है आपका कॉमन, ये दोनों कॉइल पार्ट है, और ये NO और ये NC. कॉमन को मैं बीच में रख रहा हूँ ताकि आसानी से ये बैठ सके. रिले का जो कॉमन है, by the help of 270 ohm I will give supply to common from my positive rail. Now I am going to connect my 2 LEDs. Now this is cathode. Directly I am going to connect cathode to ground. This is my ground. Now another LED I am going to connect here on negative rail. Now this is glowing. That means this part is NC and this is NO. When I active my relay, then it will be glow. For energized relay, I am going to use a 9-volt battery. दिस इज़ वर्किंग. जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी रिले एक्टिव हुआ तो ये बल्ब ग्लो होने लगा, लेकिन ये ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये NO पे चला गया. जैसे ही मैंने इसको ऑन करूँगा बाय द हेल्प ऑफ टॉगल स्विच, देन दिस बल्ब विल ग्लो. दिस इज द सिंपल रिले सर्किट. ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूरी लाता रहता हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.